Kattasheri Joseph Yesudas, born on 1st January 1940, is an Indian playback singer and musician who sings Indian classical, devotional, and film songs. Yesudas is estimated to have recorded more than 50,000 songs. Yesudas holds the record for singing 11 songs in different languages in a single day. He has also composed a number of Malayalam film songs during the 1970s and 1980s. പിന്നെയും ആരോക്കിനാവിൻ്റെ പടികടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം. പിന്നെയും ആരോക്കിനാവിൻ്റെ പടികടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം. പിന്നെയും ആരോ നിലാവത്ത് പൊൻവേണൂതുന്ന മൃദുമന്ത്രണം. പിന്നെയും ആരോ കിനാവിൻ്റെ പടികടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം. പടികടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം. പുലർനിലാച്ചില്ലയിൽ കുളിരിടും മഞ്ഞിന്റെ പൂവിതൾ തുള്ളികൾ പെയ്തതാവാ. അലയുമീ തെന്നലൻ കരളിലെ തന്തിയിൽ അലസമായി കൈവിരൽ ചേർത്തതാവാ. മിഴികളിൽ കുറുകുന്ന പ്രണയമാപ്രാവിന്റെ ചിറകുകൾ മെല്ലെ പിടഞ്ഞതാവാ. മിഴികളിൽ കുറുകുന്ന പ്രണയമാപ്രാവിന്റെ ചിറകുകൾ മെല്ലെ പിടഞ്ഞതാവാ. താരേ തുറക്കുന്ന ജാലകച്ചില്ലിൽ തെളിനിഴൽ ചിത്തം തെളിഞ്ഞതാവാ. പിന്നെയും ആരോ ആരോ ആരോ. Krishnan Nair Shantakumari Chitra, born on 27th July 1963, credited as K. Chitra or Chitra, is an Indian playback singer and Carnatic musician. In a career spanning over 4 decades, she has recorded over 25,000 songs, various Indian languages including Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, Hindi, etc. She is regarded as a cultural icon of Kerala and is fondly called as the Melody Queen. ശ്യാമമേഘമേനി യദുകുല സ്നേഹദൂതുമായി വാ. ഇതുവഴി കാളിന്റെ തടത്തിൽ അരിയൊരു പ്രേമഹർഷമായി കുഴൽവിളി അനനെയ്യും നദി തന്റെ ഹൃദയം പുളകം ചൊരിയുകയായി. സുരഭിലമാകും സുന്ദര സന്ധ്യാ പനിനീർമഴയിൽ കുളിരുമ്പോൾ അഴകായി അരികിൽ വരുമോ? പനസന സഗ സഗമഗമപ മപനി പനസന സഗ ശ്യാമമേഘമേനി സഗമപ സ്നേഹദൂതുമായി വാ. നിപമപ കാളിന്റെ തടത്തിൽ സഗമപ പ്രേമഹർഷമായി.
Sripati Panditarathila Balasubramaniam, 4th June 1946 to 25th September 2020, also known as SPB or Balu, was an Indian playback singer, television presenter, music director, actor, and film producer who worked predominantly in Telugu, Tamil, Kannada, Hindi, and Malayalam films. S.P. Balasubramaniam is considered to be one of the best singing legends the country has ever produced. Balasubramaniam has won 6 National Film Awards for Best Male Playback Singer for his works in 4 different languages: Telugu, Tamil, Kannada, and Hindi, etc. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இந்நாள் நல்ல தேதி. என்னையே தந்தேன் உனக்காக, ஜன்மமே கொண்டேன் அதற்காக. நான் உரை நீங்க மாட்டேன், நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன், சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இந்நாள் நல்ல தேதி. என்னையே தந்தேன் உனக்காக, ஜன்மமே கொண்டேன் அதற்காக. Sujata Mohan, credited as Sujata, is an Indian playback singer who is popular for singing in Malayalam, Tamil, and Telugu movies. In a career spanning 46 years, she has recorded more than 10,000 songs. Till date, Sujata has received several awards and recognitions for her work in the South Indian film musical world. She has been awarded the Kalaimamani Award by the Government of Indian State Tamil Nadu in 2021. நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது, காற்று என் காதிலேதோ சொன்னது. இதுதான் காதல் என்பதா, இளமை பொங்கிவிட்டதா, இதயம் சிந்திவிட்டதா, சொல் மனமே. நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது, காற்று என் காதிலேதோ சொன்னது. இதுதான் காதல் என்பதா, இளமை பொங்கிவிட்டதா, இதயம் சிந்திவிட்டதா, சொல் மனமே. Allah Rakha Rahman, also known as A.S. Dilip Kumar, born on 6 January 1967, is an Indian film composer, record producer, singer, and songwriter who works predominantly in Tamil and Hindi films. In 2010, the Indian government awarded him the Padma Bhushan, the nation's third highest civilian award. Among Rahman's awards are 6 National Film Awards, 2 Academy Awards, 2 Grammy Awards, a BAFTA Award, a Golden Globe Award, 15 Filmfare Awards, and 17 Filmfare Awards South.
लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है। बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। Rahul Dev Burman, 27th June 1939 to 4th January 1994, was an Indian music director. Burman is considered one of the greatest music composers of the Indian film industry. From the 1960s to 1990s, Burman composed musical scores for 331 films. Though Burman laid the foundation for numerous Bollywood music directors to pave the path for the future of music in Bollywood cinema, he was awarded a total of only 3 Filmfare Awards. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। Shankar Mahadevan, born on 3rd March 1967, is an Indian singer and composer. In 2000, he received the National Film Award for Best Male Playback Singer for the song Enna Sollai Poigari in the movie Kandu Kondain Kandu Kondain. In 2007, he received the Swaralai Kairali Yesudas Award for outstanding contribution to Indian film music, etc. तुम्हें आज मैंने जो देखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा, चमका है किस्मत का तारा, बदली नसीब की रेखा। तुम्हें आज मैंने जो देखा,
Lata Mangeshkar, born on 28 September 1929, is an Indian playback singer and music director. She is one of the best known and most respected playback singers in India. She has recorded songs in over 1,000 Hindi films and has sung songs in over 36 Indian languages and foreign languages, though primarily in Marathi, Hindi and Bengali, etc. In 2001, in recognition of her contributions to the nation, she was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, and is only the second vocalist. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। ठक ठक बोले इतूत डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। Kishore Kumar, 4th August 1929 to 13th October 1987, was an Indian playback singer and actor. He was one of the most popular singers in the Indian film industry, and from soft numbers to peppy tracks to romantic moods, Kumar sang in different genres. He won 8 Filmfare Awards for the Best Male Playback Singer and holds the record for winning the most Filmfare Awards in that category. He was rewarded the Lata Mangeshkar Award too. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए,
प्यार बरसाए, हमको तरसाए। Asha Bhosle, born on 8th September 1933, is an Indian playback singer and entrepreneur. She is best known for her playback singing in Hindi cinema, although she has a wider repertoire. Bhosle's career started in 1943 and has spanned over 7 decades. She has done playback singing for over 1,000 movies. In addition, she has recorded several private albums and participated in numerous solo concerts in India and abroad.